गांधी विश्वविद्यालय, जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा आज भी जीवंत रूप में है। उस श्रृंखला को अगर हम कहें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। तो मैं अपने आप को बहुत छोटा सा लिंक पाता हूँ, आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ। आशा है मेरी गलतियों को आप क्षमा करेंगे। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन कॉमर्स एजुकेशन से रिलेटेड वी आर हैविंग सो मच ऑफ डिस्कशन सिंस मॉर्निंग। द मेजर प्रॉब्लम, काफी कुछ कहा जा चुका है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को साथ शेयर करूं, इज एम्प्लॉयबिलिटी। कोई भी अगर कोई कोर्स है, अगर उसकी हम अगर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वी आर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, देन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। इफ वी आर नॉट having a right fit for our student, then who is responsible? The question comes in between. Whether the course curriculum is not up to date, whether the teaching methodology, which we call pedagogy, is not up to the mark, or the content which we require, or the soft skills, as we were saying, he is not able to present himself, he is not having the way to speak in front of the interview board. So who is responsible? If we say that teaching community is responsible, so it is partially true. Professor Bali just said that who is coming to get admission, like in entrance examination, I have seen in medical entrance examination, the examination is same. If you are meritorious, you will get MBBS seats. Again, in that you will have the ranking of college or the institute. If you are having good rank, then you will be given, suppose in UP, I have that experience, KGMC, King George Medical College, top priority given to that by the students, then second, then third. Remaining residual came to BAMS, Ayurvedacharya, then Unani, and then so on. It means we are making them to forcefully read that type of course which they are not looking for if they got the merit. So they are coming in BCom just for the sake of they are not able to get any other course, whether it is true or not. If it is true, then we should look to this issue also, that a student who is really willing to take admission in BCom should get admission in BCom or say any other course, rather than just forcing him or her that you have no other option, so take admission in that or go back. Secondly, one more thing is that, as rightly said by Professor Bali, the course contents are same in +2, BCom, then MCom, and the course designing examination criteria is same, attempt any 5 questions. Who will change that? And how we can get this change? It should be done. And through this today's conference, a message clearly should be given that okay, we are ready to change the syllabus, we are ready to make these changes right from today itself. If you are trying to make a student employable, then whatever is required we should do. Sometimes social factors binds us, like a poor student can't afford the fee for, say, vocational courses. He cannot have extra computer classes, he cannot have extra time for group discussions and so on. The difference between MBA and commerce student is, as I can clearly make it, is that he is more energetic in that sense that he has lots of confidence. And that confidence is given to him in his classroom, in his course curriculum. The society recognizes him as MBA. But in today's scenario, sir, sorry to use the word, because of mushrooming growth, can we call those institutes like you told in Bihar, Jharkhand, educational slum? Exactly. तो एजुकेशनल स्लम से आप उम्मीद क्या करेंगे? ऐसा स्लम जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ गंदगी है, देयर इज नथिंग
You can't survive even that. ऐसे educational सन से output भी ऐसे मिलेगा. Even in the private universities. Yes. Again, it is the academics. Again, जो माता पिता और सोसाइटी जो इनपुट दे रही है बच्चों को, वो दे रही है क्रेज. वो क्रेज जैसा बाली सर ने बताया, वो है मेडिसिन, इंजीनियरिंग, CDS और अधिक लिक्विडेटिव. सुबह हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर सर ने बोला कि वाणिज्य वृत्ति की बात करी सर उन्होंने. तो एक लाइन मुझे अभी अच्छी तरह से याद आ रही है. जगती वणिक वृत्ति है रखती, जगती यानी संसार, वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती. तो अगर परिणाम ही नहीं रखना है तो आप कुछ ऐसा बनाएं जिसका परिणाम बाजार के लिए उपयुक्त हो, ताकि आपके उत्पाद को वो बाजार सहज स्वीकार करे. दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में. एक होता है IM, उसको कहना नहीं पड़ता, और एक होता है मी टू, जो चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं भी हूँ, कृपया मेरी तरफ भी देख ले, कोई मुझे भी तो उठा ले. तो आज कॉमर्स स्टूडेंट की स्थिति हमने मी टू वाली बना दी. उसको कहना पड़ता है कि मैं भी हूँ, और इसीलिए उसकी इस दयनीय स्थिति पर हम सब लोग आज चिंतन और मंथन दोनों करने के लिए एकत्रित हुए हैं. ज्यादा समय ना लेते हुए एक चीज और कहूंगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हैं कि M.Com, B.Com की स्थिति और सुधरे, तो क्या ये संभव है हम सब लोगों द्वारा, अगर UGC, AICTE या और भी बॉडीज से बात की जाए, जिंदर सर आपने बोला, क्या कुछ ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ हम ये कह सके B.Com ही कर पाएगा आगे? ऐसा हुआ in Punjab University. What they did, because they were having M.Com degree in the colleges also. Okay. They wanted to introduce the internal assessment system and some other modification they wanted to do. वो कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट हो गया. तो कॉलेज वालों ने 25 में से 25 नंबर देने शुरू कर दिए इंटरनल असेसमेंट, और वो यूनिवर्सिटी में 25 में से 10, 15, 20 नंबर दे रहे. तो उन्होंने बोला हम यूनिवर्सिटी को छोड़ देंगे, वी विल गो टू द कॉलेज. तो ये प्रॉब्लम आया. देन दे सेड, देन दे डिवाइस्ड वन न्यू वे, दैट इज M.Com e-course. देन दे अवॉर्डेड दिस डिग्री. एक डिग्री सर मैंने भी देखी है, M.Com यूनिवर्सिटी MFC. उन्होंने मास्टर इन फाइनेंस एंड कंट्रोल. एक डिग्री मैंने भी देखी सर, M.Com बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. यही थी ना सर. तो फिर ये जी, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि अगर M.Com बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में था, फिर MBA की क्या आवश्यकता हुई. प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे थे. तो ये सर हमारी पीढ़ी के सामने तो हुआ ना, वो M.Com बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई MBA में, और अभी अब दो डिग्रीज हमने भी इंट्रोड्यूस करी है जो हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं. MBA जनरल, MBA बिजनेस फाइनेंस एंड MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स. आप कॉमर्स ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का कहाँ चाहेंगे भविष्य देखें. इन सारी एनोमलीज के बीच में ये जितनी विसंगतियां हैं, हम हाउ कैन वी फाइंड अ राइट फिट फॉर द कोर्स करिकुलम. या तो हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है, वी आर प्रोवाइडिंग द डिग्री, या तो हम डिग्री में चेंज करें या कोर्स करिकुलम में चेंज करें. सुबह से यही बोल रहे हैं, इट शुड बी, हु विल डू दिस एंड हाउ वी कैन डू दिस. बहुत छोटी सी मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग सब चाहें तो इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ ऐसा चेंज कर सकें और UGC से रिकॉग्नाइज करा सकें इस चीज को, सो दैट इट कैन बी अ रियल बून फॉर आवर स्टूडेंट्स. One more thing, government should give enough of the funds, as the major problem is that in commerce department only one teacher has been given, or say they gave example like in Sanskrit or in history we have only one teacher. Okay, if you need that, then you need funds, and who will allocate the funds? Regulatory bodies of the government, or you can have your self-finance institute. Again the question comes, if the self-finance institute will be there, then they will charge the fee according to their expenditure, and they make their own course curriculum. So fund allocation should be proper, it should be given due advantage and importance both. As Professor Chaturvedi in the morning said, I will strongly agree to the point that if you want to see the future of commerce education, we should focus on M-commerce. It is the real force behind e-commerce, whether it is e-merchandise or whether it is e-finance.
Now it is the responsibility of telecommunication industries, together with multinational companies or corporate world, to see to this opportunity, that is mobile commerce. With this, I would like to conclude my words, and I am thankful to the organizing committee for inviting me, especially Dr. Gagan and Dr. Manjari. And once again, I am thankful to all of you. Thank you. At the end of deliberations, I congratulate and thank Professor Bali to be here and deliver lecture, Dr. Bagish Paliwal, and also person sitting in the audience. Thank you. Sir, we are thankful to our distinguished guests for sharing their knowledge and experience with us. Special thanks to Professor Balakrishnan Pali to highlight the basic issues in the field of commerce and also discuss the various aspects of research. Thank you all once again. Now I request Professor R.C. Mishra sir to facilitate Professor Balakrishnan Pali by presenting him a memento and show. किसी ने एक सवाल भी पूछना चाहा था बीच में, अब मैं चाहूँगा वो पूछ ले इस वक्त, मैं ये दे दूँ, उसके बाद सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ज़्यादा जरूरी चीज़ है। Thank you. Now I request Ms. Priya Mahajan to facilitate Dr. Bagish Paliwal by presenting the memento. Thank you all once again. अब जिसका कोई प्रश्न था जो पूछना चाह रहा था, he can ask, he or she can ask. Somebody had raised some question, wanted to ask in between. चलिए कोई नहीं, फिर प्रोफेसर बाली उस वक्त अपनी रॉ में थे बोलने की, तो बड़ा जरूरी था। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है। Thank you. Thank you very much. Now I request Mr. Sumit Prasad to start the first technical session of this conference. Mr. Sumit. Thank you very much, sir. A very warm good afternoon to one and all present over here, our distinguished guests and participants. I am Sumit Prasad, Assistant Professor in School of Management Studies and Commerce, and your host for the first technical session, Opportunities and Challenges Commerce Education. I take this opportunity to invite you to share your valuable ideas and opinions through presentations and discussions on the very interesting theme of this session. May I now introduce the chairman for this technical session, Professor Balakrishnan Pali, former head Department of Commerce, HP University, Shimla. We are already in dialogue with Professor Balakrishnan Pali. May I also request the co-chair for this session, Professor Prem Mohan, Department of Commerce, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. Professor Prem Mohan, sir. Professor Prem Mohan, sir, is Dean in Commerce and is serving as Dean and Head in Faculty of Commerce in Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. He is a member of Academic Council in his university also. He has served as ex-Dean of Faculty of Commerce in our university, Hyderabad, and represented all the bodies of our university. He has also produced 11 PhDs and has written more than 6 books. He has published more than 15 research papers and has attended and participated in 29 national and international conferences. He is also a district billiard champion. Now I request Dr. Dharan Singh, our organizing secretary of CICM 2014,
Kindly welcome our guest by presenting them on stage. Thank you, sir. Over to you, sir. Professor Balkrishna. सर इसके अंदर है वो कंप्यूटर में हो गया होगा कंप्यूटर का